हाय। आईपीओ सीरीज के अगले लाइव स्ट्रीम या तो वीडियो में अगर आप इसको रिकॉर्डेड देखेंगे तो मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो वीडियो है, आज की जो लाइव है, उसमें हम जो आईपीओ डिटेक्ट करने वाले डेट इज सूरज एस्टेट डेवलपर, जो कि 18 तारीख से मतलब मंडे से वो अपनी आईपीओ शुरू कर रहा है। चलिए देखते हैं कि सूरज एस्टेट डेवलपर इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए क्या लेके आया है। तो अगर हम इश्यू के बारे में बात करें, Surat Estate Developer IPO is a book-built issue of 400 crores. The issue is entirely a fresh issue of 1.11 crore shares, which means ये जो अगर कंपनी ने 400 करोड़ रुपए मुहैया कर लिया, आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, तो all the 400 crores will go to company because it is not any share is being offered as a offer for share. पैसे सारे कंपनी के पास जाएंगे. We are going to discuss in this video वो कहाँ पे यूज होंगे. Suraj Estate Developers IPO open for subscription on December 18, 2023 and closes on December 2023. Allotment is expected to finalize by the 21st December. It will be listed on NSE, BSE, both the exchanges, and tentative listing date is 26 December. IPO price band is rupees 340 at the lower end and rupees 360 at the higher end. The minimum lot size for an application is 41 share, which is amounting to rupees 14,760 rupees. ITI Capital, Anandrati Securities are the book running lead manager of the Suraj Estate Developer IPO, and Link Time India Private Limited is the registrar of the issue, registrar and transfer of the issue. So ये हुआ IPO क्या है, what is the offering, what are the objects, ये पैसे क्यों कंपनी इकट्ठा करने जा रही है मार्केट में से. The company intends to utilize the net proceeds from the issue towards funding of following objects. Object number 1, repayment, prepayment of aggregate outstanding borrowings of the company and its subsidiaries, Decode Estate Private Limited and Iconic Property Developers Private Limited. तो दो सब्सिडरी है, उसकी जो लॉन्स है उसको प्रीपेमेंट रीपेमेंट में यूज करेंगे. एक्विजिशन ऑफ लैंड और लैंड डेवलपमेंट राइट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. तो प्राइमरीली अगर बिजनेस टर्म्स में बात करें तो लोन कम करेगी अपनी सब्सिडीज में और साथ ही साथ में नए लैंड्स खरीदेगी. ये इसके लिए ये पैसे इकट्ठा करने के लिए सूरज एस्टेट डेवलपर प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है. अगर कंपनी बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी क्या है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986. इट्स अ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी. It develops residential and commercial real estate in the south central Mumbai region. Company does not provide any in-house construction service and it's 100% dependent on third-party contractors for the construction services of its projects. So वो खुद construction नहीं करती है, वो outsource कर देती है. Surat Estate Developers Limited has completed 42 projects in the south central Mumbai region. In addition to the completed projects, has 13 ongoing projects and 16 upcoming projects. The company's projects include Suraj Eleganza 2 and ICICI Apartment, CCIL Bhavan, Phase 1 up to the 6th floor, and Tranquil Bay 1, Elizabeth Apartment, and Mont Desir, Saint Anthony Apartment, Lumiere, and Tranquil Bay 2, Brahmasiddhi CHS, Jacob Apartments, Suraj Eleganza 1, and Glorisa Apartments, and others. As of September 30, 2023, the company, together with its subsidiaries, employed 126 permanent employees. Surat Estate has developed more than 10 lakh square feet of land in Mumbai. In the residential portfolio, Surat Estate is present in the value luxury and luxury segments in various price categories with the unit value ranging from rupees 10 million to rupees 130 million. In the commercial segment, the company has built and sold corporate headquarters for institutional clients, namely Saraswat Cooperative Bank Limited, Prabhadevi, National Stock Exchange of India, Union Bank of India, and Clearing Corporation of India Limited, Dadar. So this was a brief introduction about the company. चलिए देखते हैं कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है. Strong brand. It is known name in the South Central Mumbai region, operating for over 30 years and has developed 42 projects covering 10 lakh square feet. So that is the competitive strength. अगर weaknesses के बारे में बात करें
So it is dependent on third-party contractors for construction services, exposing it to the quality concerns. It operates in a capital-intensive industry. In fact, around 70% of the net proceeds will be used for debt repayment. The real estate segment is highly unorganized and competitive. So these are the three weaknesses of the business. अगर रिस्क फैक्टर क्या फेस कर रही है बिजनेस उसको पर एक नजर डालते चलिए. The company's business is capital intensive and requires expenditure for land acquisition and development. Therefore, the company is heavily dependent on the availability of real estate financing, which may not be available on terms acceptable to us promptly or at all. The second big risk is the company's subsidiaries have incurred losses in the last three fiscals, which could have a material impact on the construction company's business, prospects, financial condition, and cash flows as a result of operation. तीसरा जो रिस्क है, its promoter, certain members of the promoter group and directors and related entities have interest in several other ventures which are in business similar to Suraj, and this may result in potential conflict of interest. तो कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर के कुछ लोगों की और ऐसी बिजनेस वेंचर में इन्वेस्टेड है जहां पे वो सेम बिजनेस कर रही है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, राइट, फाइव 21 में कंपनी ने रेवेन्यू जो की थी वो 240 करोड़ थी, 22 में बढ़ के 273 और FY 23 में बढ़ के 306 करोड़ और फर्स्ट क्वार्टर FY 24 में 102 करोड़, विच इज ए CAGR ऑफ 12.9%. उसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी वो 21 में 6 करोड़ थी, 22 में बढ़ के 26 करोड़ हो गई, 23 में बढ़ के 32 हो गई और FY 24 क्वार्टर 1 में वो 15 करोड़ है. उसकी नेटवर्थ जो FY 21 में 29 करोड़ थी, 22 में 39 हुई, 23 में 71 हुई और Q1 FY 24 में 86 करोड़ की हो चुकी है. टोटल डेट FY 21 में तो 603 करोड़ थी, FY 22 में 640 करोड़ थी, FY 23 में 593 करोड़ कम हुई, बट अगेन बची Q1 FY 24 में वो 599 बढ़ी हुई है स्लाइटली. अगर हम peer कंपैरिजन करें तो there are already listed entities available on the market. So results are compared as on March 31st, 2023. तो हम जो देखने जाए जो इम्पोर्टेंट है वो EPS को अगर देखें कि EPS क्या अर्न कर रही है कंपनी, तो ओबेरॉय रियल्टी का 52.38 है, सनटेक रियलिटी का 0.1 रुपीज है, कीस्टोन रियल्टर्स का 7.61 रुपीज है, श्रीराम प्रॉपर्टीज का 3.88 रुपीज है, महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर का 6.56 रुपीज है, डीबी रियल्टी लॉस कर रही है -2.94 इज द EPS एंड हबटाउन लिमिटेड इज 4.14 रुपीज का. एनएवी देखने चाहे पर शेयर की, अगर ये EPS देखे तो सूरज एस्टेट डेवलपर का 10.1 रुपीज है. अगर एनएवी देखे आप देख सकते हो ओबेरॉय रियलिटी 335.81 रुपीज है, सनटेक रियलिटी का 198.45 है, कीस्टोन रियल्टर्स का 146.59 है, श्रीराम प्रॉपर्टीज का 70.58 है, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड का 116.75 है, डीबी रियलिटी का 60.69 है, अपटाउन लिमिटेड का 171.03 है, whereas Suraj Estate Developer का NAV 22.49 है. You can see that there are companies जिनका NAV Suraj Estate Developer से ज्यादा है. Price to earning देखने जाए तो ओबेरॉय रियलिटी is available around 20.44, Suntec Realty is available around debt to equity ratio of 3724, which is huge. Keystone Realtors is available around 79.58. Shriram Property is available around 17.02 P. Mahindra Lifespace is available around 73.91. DB Realty is again making losses, so it is -24.85. And Uptown is available around 10.9. तो आप देख सकते हैं कि जो पी है सूरज एस्टेट डेवलपर का 49.7 का पी पे अभी प्राइस दे रही है. अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की क्वालिटी ऑफ अर्निंग के देखने जाए तो सूरत एस्टेट डेवलपर इज अर्निंग 58%, ओबेरॉय इज अराउंड 16.8, सनटेक इज 0.62%, कीस्टोन रियल्टर्स 6.29, श्रीराम प्रॉपर्टीज 5.63, महिंद्रा लाइफ स्पेस 5.64, रियलिटी मेकिंग लॉसेस सो -5.93 एंड अपटाउन इज 2.03. नेट वर्थ इज बेटर एज कंपेयर्ड टू अदर लिस्टेड एंटिटी. अगर समरी देखें हम तो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो इट्स 3-year एवरेज ROE is 53% and ROCE is around 19% respectively. Moreover, it has generated positive cash flow in 2 of the last 3 financial years,
However, its debt to equity and interest coverage ratio stood at 8.3 and 1.4 times respectively. So that is the key concern. So probably वो आगे जाके हो सकता है कि ये जो आईपीओ में से पैसे आ रहे हैं उसमें से वो डेट कम करे तो फाइनेंशियल माइट इम्प्रूव। ग्रोथ की बात करें तो इट्स रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ग्रो एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13% and 128%. Revenue grown by 13% and profit grew by 128% respectively in the last 3 financial years. Also, its 3-year average operating profit margin stood at around 43.5%. अगर वैल्यूएशन देखें तो the stock is valued at PE of 49.7 and price to book value of 3.3 times respectively compared to its peers. Median price to earning is 45.87, so it's slightly higher than the median, and price to book of 2.9, so it's slightly higher than price to book as well. अगर कंक्लूड करें फ्यूचर क्या है बिजनेस का तो राइजिंग इनकम लेवल्स, इजियर एक्सेस टू होम लोन्स and increasing demand for office spaces are expected to drive growth. However, a high debt to equity ratio and capital requirements remains a concern. तो टिपिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो होती है कि दे आर हाईली कैपिटल इंटेंसिव और वो पैसे बाहर से लाने होते हैं और वहाँ पे इंटरेस्ट उनको अगर स्लो डाउन आता है मार्केट में तो इंटरेस्ट पे करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजों को समझते हुए यू विल हैव टू डिसाइड वेदर यू वांटेड टू सब्सक्राइब टू दी आईपीओ ऑफ दी कंपनी और वेदर यू वांटेड टू स्कीप। सो आई होप आज की जो ये लाइव वीडियो है वो आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी आगे बढ़ाने हेल्प करेगी। इफ यू विश टू फोकस कीपिंग ग्रोइंग योर मनी, आप अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक कर लिए सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस। You can also read my blogs on the planetworld.in. My podcast is available on all leading Spotify, Google, all leading platforms. Financial Freedom with Planet Wealth. आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं प्लानट वेल्थ, या तो मेरा फेसबुक ग्रुप फाइनेंशियल वेल बीइंग सर्च करके उससे भी जुड़ सकते हैं। बेस्ट वे टू गेट इन टच इज टू स्टोर माय मोबाइल नंबर 9328190022 एज प्लानट वेल्थ एंड देन सेंड मी a WhatsApp मैसेज एड मी करके अपना नाम डाल के, so that I can add your mobile WhatsApp number into my WhatsApp broadcast, which will ensure that you get this kind of valuable content as and when I produce. Right? But the requirement is you need to save your number in your mind, my number in your mobile, so that broadcasting message are received at your end. I hope आज की ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप अगर इसको लाइव देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। अगर आप इसको रिकॉर्ड देख सकते हैं फिर भी आप पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू, बाय।